Here is it, first one. A little lengthy, but try it first. I'm assuming that I'm audible and visible to all. All of you can hear me, all of you can see me. Here we start with the very first question. Please try to answer the questions. Try to make it an interactive class. थोड़ा सा मिलके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, सबको अच्छा लगेगा. Yes, says Rushikesh. That's great. Thank you, Rushikesh. Okay, I think we can start doing it. This is a slightly lengthy question, so I do not want to spend too much time on this. Otherwise, I mean, this will take a lot of time for us. जो क्वेश्चन थोड़े से आसान टाइप के होंगे उनमें मैं आपको ज्यादा टाइम दूंगा करने के लिए. So doing this question probably might take a little more time. So let's start discussing it straight away. Ganesh borrows rupees X from Adarsh at 12% annual interest. He then adds rupees Y of his own money and lends rupees X plus Y to Ishwar at 15% annual interest. At the end of the year, after returning Adarsh's dues, the net interest retained by Ganesh is the same as that accrued to Adarsh. On the other hand, had Ganesh lent rupees X plus 2Y to Ishwar, I mean initially he lent X plus Y to Ishwar. Had he lent X plus 2Y to Ishwar at 15%, पहले भी 15% पे था, अब भी 15% पे, then the net interest retained by him would have increased by rupees 450. If all interests are compounded annually, then find the value of X plus Y. I do not see any usage of this compounded annually because ultimately everything is happening at the end of 1 year. तो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट भी होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज जस्ट अबाउट 1 year. बट यस, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ये बताना जरूरी हो जाता है, इट इज कंपाउंडेड एनुअली. लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. सो हाउ शुड आई स्टार्ट विद इट? आई वुड सी, if he lends X plus Y rupees to Ishwar at 15% annual interest, and if he lent X plus 2Y rupees to Ishwar at 15% annual interest, his interest would have increased by 450 rupees. You are giving X plus Y rupees or X plus 2Y rupees, right? Here also you are getting 15%. Here also you are getting 15%. So can I say the extra interest that you are getting, it is nothing but 15% of Y? Is that right? 15% of X plus Y or 15% of X plus 2Y. The only thing is the extra interest is because of that extra Y rupees in the second case. तो वो जो extra Y rupees है second case में, उस पे जो 15% मिल रहा है, that is the extra interest, and it is given to us as 450 rupees. So can I say Y is equal to 450 divided by 15%, that is equal to 3000 rupees. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से मुझे डायरेक्टली y की वैल्यू मिल गई. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. प्लीज whenever you have a doubt, put it in the comment section. I'll answer it there. You want me to repeat, I'll repeat as well. जहां आपको दिक्कत लगे, लाइव क्लास करने का यही तो फायदा होता है. बीच में कभी डाउट आता है, आप कुछ चाहते हैं मुझसे दोबारा पूछना, तो यू कैन जस्ट आस्क मी अबाउट इट. सो फ्रॉम हियर आई गॉट y as 3000. अब सेकंड बात आती है. गणेश बोरोज x rupees from आदर्श at 12% annual interest. Then he lends X plus Y rupees to Ishwar at 15% annual interest. At the end of the year, after returning Adarsh's dues, तो पहली बात तो ये कि आदर्श के ड्यूज कितने होंगे. कहने से आदर्श's dues are 12% of X. आदर्श का ड्यू तो ये था 12% of X. After returning this, the net interest retained by Ganesh. तो गणेश ने रिटेन कितना किया होगा? देखिए, एक्स पेड 12%, तो ही पेड बैक टू आदर्श, बट ही गॉट 15% ऑफ एक्स फ्रॉम ईश्वर. इसका मतलब रिटेन कितना कर लिया उसने? 3% ऑफ एक्स प्लस उस वाई का 15% और एक्स्ट्रा मिल गया, दैट इज 15% ऑफ वाई. क्या ये बात मेरी समझ आती है आप सबको? मैं रिपीट करता हूं. इंटरेस्ट दैट ही हैज टू पे, दैट इज टू आदर्श, वो कितना पे करना है? 12% ऑन एक्स. और उसके बाद मिला कितना उसको ईश्वर से? ही गॉट 15% of x from ईश्वर.
जिसमें से 12% तो आदर्श को दे दिया, ही इज लेफ्ट विथ 3% ऑफ एक्स, एंड ही ऑल्सो हैड लेंट वाई रुपीज टू ईश्वर, तो उसका 15% जो था वो और एक्स्ट्रा मिल गया. सो द टोटल इंटरेस्ट रिटेन्ड बाय हिम is 3% of x plus 15% of y, whereas the amount paid to others is 12% of x. Question says it is the same as that accrued to others. Accrued मतलब जो उसको दे दिया, accrue करना मतलब इकट्ठा करके आदर्श को जो देना था. They are equal. So from here can I say 9% of x is equal to 15% of y, where y is 3000. 3000 का 15% होता है 450. तो 9% of x is 450. That means x is equal to 5000. Our job is done, because question is asking you what is the value of x plus y. x है 5000, y है 3000, दोनों को ऐड करके you get B option as 8000. So that is the right answer for question number 1. I repeat, this was slightly lengthy question, but we have tried to make it as small as possible. कोशिश मैंने यही की है, जैसे पहले हम लोगों ने वो स्टेटमेंट उठाई जिससे सीधा y मिला, then we looked at the first statement जिससे x और y का रिलेशन मिला. Because I already have y, so I put it there and I got the value of x, which gave me the final value of x plus y as 8000. I am sure that now it is understood to all of you. That was the very first question that we have had. Okay. I'll move ahead now to question number 2. Question number 2 is here on your screen. Please try that, and after that we'll be discussing about this as well. Here is question number 2, which is a theta question, but a good question. Try this first. पहले आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मिलके try करते हैं. Once again, a good question that we see here on our screen. Let's start doing it now. Let a1, a2, a3 up to a72 be positive integers such that a1 is less than a2, which is less than a3, so on and so forth up to a72. Suppose their arithmetic mean is 1 less than the arithmetic mean of a2 to a72, and a72 is 200, then the largest possible value of a1 is what? Let's start doing it. He says their arithmetic mean, here their means of all of them, their arithmetic mean is 1 less than the arithmetic mean of a2 to a72. However, if you have studied algebra well, sorry, averages well, I would want you to do it very fast here. अगर आपने averages पढ़ा है तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि a1 को exclude करने से the average is decreasing by 1. When a1 is excluded, the average, when a1 is excluded, the average increases by 1, because their average is 1 less than the average of all the numbers which are without a1. मतलब अगर मैं a2 से a72 इन सभी का एवरेज अगर मान लीजिए कहता हूं a है, then average of a1 to a72, he says it is a minus 1. I hope this is clear to all. यही कह रहा है ना वो. Their arithmetic mean, their means a1 से a72 तक का arithmetic mean, it is 1 less than the arithmetic mean of a2 to a72. तो a2 से a72 का एवरेज अगर कैपिटल A है, तो a1 से a72 का एवरेज a माइनस 1 है. अगर आपने एवरेजेस पढ़ा है तो आप इससे एकदम समझ जाएंगे that what is the value of a1. The value of a1 will be a minus 72. Am I right here? अदरवाइज आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा दैट a2 plus a3 up to a72, ये तो हुए 71 नंबर्स. इफ देयर एवरेज इज a, then a1 plus a2 plus a3 up to a72, ये हुए 72 नंबर्स.
their average is a minus 1. From here I can say 71a is a2 plus a3 up to a72 और इसको मैं यहां पुट कर देता हूं. So what do I get? a1 plus 71a is equal to 72a minus 72 और जैसे ही आप इसको यहां ले जाएंगे you will get this. How did I write straight away a minus 72? By the rule of surplus and deficit in averages. आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप बायजूस एग्जाम प्रेप में पढ़े तो हम लोग इसका जनरली डिस्कशन करते हैं हमेशा क्लास में. तो उसमें हम लोग ये बात करते हैं दैट बाय इंक्लूडिंग वन नंबर एवरेज इज डिक्रीजिंग बाय वन. एवरेज वन से डिक्रीज हो रही है मतलब हर नंबर वन से डिक्रीज हो रहा है. तो अगर 72 नंबर्स वन वन से डिक्रीज होंगे तो इसका मतलब टोटल में 72 का डिक्रीज आ रहा है. राइट. इसका मतलब आई कैन से द एवरेज इज ए माइनस सॉरी ए वन इज ए माइनस 72. आई होप इट इज अंडरस्टूड. तो मैं बाकी वाला पोर्शन जो है हटा देता हूं एज म्यूजिक कोर इज ऑल्सो सेइंग दिस इट इज अंडरस्टूड. तो ये इसको हटा देता हूं मैं यहां से. ओके. सो नाउ व्हाट नेक्स्ट? Question says that all these numbers are first of all he says positive integers. पहली बात तो ये सभी positive integers हैं. दूसरी बात ये that a1 is less than a2 is less than a3 so on and so forth up to a72. Question is saying a72 200 है, largest possible value of a1. If a1 is a minus 72, can I say it will be largest when a is largest? When capital A is largest, then A1 would also be largest. और कैपिटल ए लार्जेस्ट कब होगा? कैपिटल ए है इन सब की एवरेज. ये लार्जेस्ट तब होगा व्हेन आई टेक लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर्स देयर. तो A72 की वैल्यू है 200. A71 इज स्मॉलर देन दिस, तो लार्जेस्ट पॉसिबल A71 इज 199. Largest possible A70 is 198, and that means if I keep going up to A2, the largest possible value of A2 will be equal to what? It would be equal to 130. एंड ऑफ कोर्स द एवरेज ऑफ ऑल दीज नंबर्स. ये एपी सीरीज है. एपी सीरीज का एक एवरेज निकालने का सीधा सा तरीका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2. 200 प्लस 130 बाय 2 इज 165. 165 is the largest possible value of capital A. So the largest possible value of A1 is 165 minus 72, which is equal to 93. So yes, 93 is the right answer for this question. That was another slightly difficult question I would say, but let me tell you, मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, all these questions are exactly of CAT standard. We have made these questions as a replica of CAT questions only. उसमें हम लोगों ने कुछ फिगर्स को हल्का फुल्का चेंज किया है. तो अगर वो कैट के क्वेश्चन का ही रेप्लिका है तो आप मान के चलो जो आप क्वेश्चन सामने कर रहे हो, दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी अपीयर्ड इन कैट एग्जैक्टली इन द सेम फॉर्मेट. तो फर्क इतना होगा 72 नंबर्स नहीं रहे होंगे, वहां थोड़े कम या ज्यादा रहे होंगे. A72 की वैल्यू 200 ना रह के 300 400 टाइप कुछ रही होगी. सो दैट वेज यू आर बेसिकली डूइंग एग्जैक्टली कैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन से सो. ठीक है. क्योंकि कैट के क्वेश्चंस करते करते कई बार तो हमें आंसर्स ही याद हो जाते हैं. तो अगर कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, इट एग्जैक्टली टेल्स यू वेदर यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और नॉट. कि आंसर याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को पक्का खुद से सॉल्व कर पाएंगे. इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट, that means you have understood it better now. I'm sure this solution is clear to all of you, though it was a difficult question, but I'm sure now it is understood. If it is, please do press the like button as well. That's the fee that you pay for these sessions. I'll move ahead from this question now. Question number 3 पे आते हैं. On your screen, it's here now. Let us see who answers fastest for this question number 3. In my opinion, probably the easiest question of this class, of this session. सबसे आसान क्वेश्चन शायद आपको यही नजर आएगा. Extremely easy question. Very good, music core. Music core is back. Missed you in the last class. Very good, DJ Gautami.
Let's start doing it. Actually, why did I say this question is easy? Because the options made it extremely easy. ऑप्शंस ने काम बहुत आसान किया, ध्यान से देखिए। और मैं एक्सपेक्ट करता था सभी लोगों से कि इसका आंसर फटाफट देंगे, क्योंकि आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं उस तरीके के। The scores of Arvind and Bhaskar in an examination are in the ratio of 3:4. After an appeal, their scores increased by the same amount, and the new scores are in the ratio of 34:41. The ratio of Bhaskar's new score to that of original score. भास्कर का नया स्कोर 41 का मल्टीपल है, तो न्यू स्कोर टू ओरिजिनल स्कोर विल बी 41 का मल्टीपल इज टू समथिंग। ये गया, ये गया, ये गया, माय आंसर इज ए। ठीक है, तो उस तरीके से देखा जाए तो इससे बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन, आप सीधा सीधा इसके थ्रू कर सकते थे। दैट वाज एक्सट्रीमली इजी। दो हियर व्हाट आर वी सेइंग, अरविंद और भास्कर के स्कोर्स का रेशियो था 3:4। He says after an appeal their scores increased by the same amount and now their scores are in a ratio of 34:41. So एक मैं आपको आसान तरीका बताता हूं इन क्वेश्चंस को करने का। ऑफ कोर्स अगर यहाँ तो ऑप्शंस इस तरह के थे, अगर सारों ऑप्शंस में 41 टू समथिंग होता तो क्या करते, दैट माइट बी योर क्वेश्चन, तो उसके बारे में भी मैं साथ के साथ बात करता हूं। सी, इफ टू पीपल हैव देयर स्कोर इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट, स्कोर्स में अगर सेम अमाउंट से इंक्रीज हो जाए तो कहना इसे कि डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स विल रिमेन द सेम। डिफरेंस जितना पहले था डिफरेंस उतना ही रहेगा। तो अगर अभी मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है 7 का, तो पहले भी डिफरेंस 7 होना चाहिए था, बट आई सी अ डिफरेंस ऑफ 1। सो लेट्स मेक दैट डिफरेंस आल्सो 7। कैसे बनेगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिफरेंस 1 है, 1 को 7 बनाने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 7। So 7 threes are 21, 7 fours are 28. So I can say if Arvind and Bhaskar's scores were 21 and 28, they must have become 34 and 41 after increasing by the same amount. आप देखिए यहां भी 13 का इंक्रीज आ रहा है और यहां भी 13 का इंक्रीज आ रहा है। Question is asking you Bhaskar's new score to old score. The answer is 41:28. As I said, the question was extremely easy because of the kind of options it had, but even without that, you could have answered it very fast. That's question number 3 now. I'm sure it is understood to all. I'll move ahead to question number 4 on your screen now. The last class I was in college, okay, Musicore. I'm sure you would have attended the recorded session then, because you have been doing it very regularly, and I'm sure this is going to help you a lot. Mark my words, in the exam time, you are going to have a big help through these questions. Harold is the first person to answer it as B, 72.45%. Very good, Harold. The gym has got the answer as C. So first two answers we have got as B and C from Harold and the gym. Musicore has got the answer as A. So we got three answers. All three are different. B, C and A. I hope the answer is not D. बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तीन आंसर्स आए बी सी है और पता लगे सही आंसर डी है। That should not happen. Let us start doing it then. A jar contains a mixture of 375 ml of water and 500 ml of alcohol. Vikas takes out 20% of the mixture and substitutes it by water of the same amount. The process is repeated once again. The percentage of water in the mixture now is. It's a question of removal and replacement. You are taking out 20%, that means 1/5 from the solution, and you are substituting by water. In case of replacement, if you would have done these classes, we would have told you, you always work on the quantity which does not come from outside. Here he is substituting with water. इसका मतलब water तो वो बाहर से डाल रहा है, तो इसका मतलब आपको उस water पे काम नहीं करना है, because water is coming from outside. So I should be working on the quantity which is not water, that is alcohol.
So if I talk about alcohol, going by the formula of removal and replacement, alcohol out of total, it is equal to the initial concentration of alcohol, which is 500 by 875. भाई 375 प्लस 500 टोटल था, उसमें से 500 एल्कोहल था, इनटू 1 - 1/5, क्योंकि आप हर बार 1/5 निकाल रहे हैं और प्रोसेस आपने 2 बार की तो उसका स्क्वायर हो जाएगा. So this cancels out at I think 4/7 into 1 - 1/5 is 4/5. 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा 4/5 into 4/5. This gives me 64 divided by 175. So finally, alcohol is 64 out of 175. But question is talking about percentage of water. तो water कितना होगा out of total? It is 1 minus alcohol. So 1 minus alcohol will be the proportion of water. It is 36 plus 75, 111 divided by 175. हमसे वो परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 25 4s are 25 7s are. I have 444 divided by 7, which is very close to 63 के करीब. So my answer is option A, that is 63.42% is the right answer. So option A is the right answer. Music core got it correct. Harold and the Zim. I am sure that both of you got your, mistake now. Probably you might be making some mistake because of which you got the answers as B and C. The right answer is option A, which gives me the answer as 63.42%. It's a simple question based upon removal and replacement. अगर आपने रिमूवल रिप्लेसमेंट पढ़ा है तो आपको बहुत आराम से ये आता होगा. फाइंड द इनिशियल प्रोपोर्शन ऑफ एल्कोहल, देन 1 minus the quantity withdrawn and whole raised to the power the number of times the process is done. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, यू ऑलवेज वर्क ऑन द क्वांटिटी विच नेवर कम फ्रॉम आउटसाइड. जैसे यहां पे बार बार सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है पानी से, सो वाटर इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो आप उसी पे काम करते हैं जो बाहर से नहीं आता है. सो देयरफॉर यू हैव टू वर्क अपॉन एल्कोहल, get the proportion of alcohol, then water would be 1 minus alcohol. वो करके आपको water भी मिल जाएगा. That's how you get the answer for question number 4. I'm sure it is clear to all. I'll move ahead now to question number 5 on your screen. It's here now. Let's start doing it. Here we have question number 5 now. Any answer for question number 5? I'm sure all of you are trying this. No answer yet.
Let us start discussing it and I'll give you good solution. I will something important here to understand that how can you do these questions a little faster, because I'm sure you would be stuck here in those fractions. Those are becoming a little difficult. So how can you make it a little easy? I'll try to do it for you. There are two drums, each containing a mixture of paints A and B. In drum 1, A and B are in the ratio of 8:7. The mixtures from drum 1 and 2 are mixed in a ratio of 3:2. And in this final mixture, A and B are in the ratio of 112:113. In drum 2, then A and B were in what ratio? ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे. So we have drum 1 in which A and B are in a ratio of 8:7. Drum 2 in which A and B are in what ratio I do not know, but the point is that these two are mixed in a ratio of 3:2. And finally he says that A and B are in a ratio of 112:113. Question is asking you what is the ratio of A and B in the second mixture. ये आपसे वो पूछ रहा है. ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं. देखिए जो फाइनल मिक्सचर बन रहा है, इट हैज A and B इन अ रेशियो 112 एंड 113. तो A और B का सम कितना आ रहा है? दैट इज 225, राइट? 112 plus 113 is 225. That means if the resultant mixture is 225 grams, in that case first mixture plus second mixture should also be 225 grams. लेकिन मैंने तो 3:2 के रेशियो में मिलाया है. If 3:2 is making it 225, 3 plus 2 5 अगर 225 है तो 5 का तो ये कितने टाइम्स बन रहा है? इट इज 45 टाइम्स. सो कैन आई से आई हैव मिक्स्ड 135 grams of the first mixture and 90 grams of the second mixture. समझ रहे हैं मेरी बात? 112 plus 113 225 है. मतलब अगर टोटल 225 बना, आउट ऑफ विच 112 इज ए एंड 113 इज बी, सो वो 225 टोटल कैसे बना? 3 plus 2 225 है, इसका मतलब 45 टाइम्स है. सो आई हैव टेकन 135 ग्राम फ्रॉम ड्रम 1 एंड आई हैव टेकन 90 ग्राम्स फ्रॉम ड्रम 2. अब ये 135 जो है ये 8 plus 7 15 का 9 टाइम्स है. तो यहां से a कितना आया? 8 into 9 दैट इज 72. भाई 135 को आप 8:7 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. 8 plus 7 is 15. 15 into 9 is 135. So A is 8 into 9. B is 7 into 9. मैं B को चेक ना करके सिर्फ A को चेक कर ले रहा हूं. So 72 A तो आ गया ड्रम 1 से. ड्रम 2 से कितना आया फिर? 112 minus 72 that is 40. और 40 अगर यहां से A आया तो B कितना आया? 50. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? A और B का रेशियो 4:5. So B option becomes the right answer for us. ये जो 112:113 था, इट वाज अ बिग हिंट फॉर अस. लेकिन अगर ये 112:113 ना होता, लेट अस से इट वाज समथिंग लाइक 6:7, तो मैं क्या करता? तो 6 और 7 का सम 13 है, लेकिन जो 3:2 के रेशियो में मिला है उनका सम 5 है. तो मैं 5 और 3 का एक कॉमन मल्टीपल ले लेता, दैट इज 65. तो 6:7 को मैं क्या करता? मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता 65 बनाने के लिए. 3:2 को मल्टीप्लाई बाय 13 कर देता 65 बनाने के लिए. एंड देन वंस अगेन आई वुड हैव कैलकुलेटेड लाइक दिस एंड यू वुड सी without a variable you would be able to get the answer. Here we did not do anything else, we did not take any kind of fractions. कोशिश कीजिए इस तरह से क्वेश्चंस को करने की, it will help you a lot during your exam process as well. Okay, I am sure that it is understood to all. सबको पसंद आया होगा ये सॉल्यूशन. अगर अच्छा लगा है तो आपको लाइक भी करना है. ये काम आपको सिर्फ करना है, बाकी काम मैं कर ही रहा हूं अपने आप. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन इज हियर. आई विल गिव यू अ गुड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल. पहले आप लोग कीजिए, फिर बात करते हैं इसके बारे में. Here is question number 6. And one more thing, if you guys have any kind of questions, queries relating to any MBA preparation or let's say syllabus or about our product or anything else, right? So we are also giving you a good opportunity to talk to us one-to-one now. In the description box, you will find a CAT counseling form. Just fill up that form. You'll get a call from our side and you can clear all your queries or doubts regarding the preparation. Not exactly related to बायजूस ओनली. ठीक है, आपको ये लगता है नहीं कौन सा कॉलेज अच्छा है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस इतना है, मैं एलिजिबल टू है कॉलेज, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए,
और कैट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हाउ मच स्कोर इज गुड इनफ, एनी सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, you can have an answer from us in a one-to-one counseling session. Just fill up that form, you'll get a call from us. Music core once again has answered as B, that is 20%. We got one answer. Can we have any other answer? The Jim, Harold, anyone else? Rishikesh? Let us start solving it then. A 25% ethanol solution is mixed with another ethanol solution, say S, of unknown concentration in the proportion 2:3 by volume. Okay, I got another answer from Prashant. He says D. Great. This mixture is then mixed with an equal volume of 25% ethanol solution. If the resultant mixture is a 23.5% ethanol solution, then the unknown concentration of S is what? So there is this first solution which has got 25% ethanol. It is mixed with the second solution which has got, let us say, S percent of ethanol, and they are mixed in a ratio of 2:3. They are mixed in a ratio of 2:3. Then he says, this mixture is then mixed with an equal volume of 25% ethanol solution. That means of this solution, an equal volume as equal to the total mixture now, that has been put again. तो अभी तक का टोटल कितना है मेरे पास? 2:3 का मतलब है 2 parts of first, 3 parts of second, टोटल 5 है, और उतना ही हमने फर्स्ट फिर से डाल दिया, तो कहने से फर्स्ट तो इसका मतलब 7 हो गया है. आर यू गेटिंग इट? In a mixture, 2 kg is solution 1, 3 kg is solution 2, टोटल हो गया 5 kg, और क्वेश्चन कहता है उतना ही 5 kg ही solution 1 और डाल, तो जो पहले से 2 था उतना ही 5 और डाल दूंगा तो वो 7 हो जाएगा. सो द रेशियो इन विच दे आर मिक्स्ड इज 7:3. रेशियो इन विच दे आर मिक्स्ड इज 7:3. अब ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, इट हैज गॉट 25% इथेनॉल, सेकंड सॉल्यूशन हैज गॉट S% इथेनॉल, तो हमारे पास ओवरऑल इथेनॉल कितना रहा है? 23.5. तो कैसे मिलेगा? 25% इंटू 7 प्लस S% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 23.5%. सिंपल. भाई वेटेड एवरेज ही तो है. 25% वाले के 7 पार्ट्स, S% वाले के 3 पार्ट्स, उनको मिक्स करके हमारा 23.5% आना चाहिए. सो दिस गिव्स मी 175% प्लस 3S% is equal to 235%. So S% is equal to 20%. So B option is the correct answer for us. That is the final answer for us. The correct answer is 20%. So music core is saying 23.5 lies between 20 and 25. But yes, that's correct. By that logic, music core, I could have eliminated 25 and 30, but not 10. Because 23.5 is also between 10 and 25. उन दोनों के भी बीच में है. तो उसकी वजह से मैं उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूं. अदरवाइज अगर वो मान लीजिए 10 ना हो के वो अगर मान लीजिए 40 होता, तो आई वुड हैव आंसर्ड इट विद इन ए सेकंड. कह रहा है देखिए, आंसर तो मेरा इन दोनों के बीच में होना चाहिए, वो इतना जा रहा है, उसको हटाओ, दिस इज माय आंसर. स्ट्रेट अवे आई कुड हैव सेड दैट 10 वाज द प्रॉब्लम. उस 10 ने प्रॉब्लम क्रिएट की, अदरवाइज एवरीथिंग वाज ओके. बट गुड ऑब्जर्वेशन म्यूजिक कोर. एज आई सेड, ये ऑब्जर्वेशन यहां करेंगे तभी एग्जाम टाइम पे भी कर पाएंगे. देखिए कुछ भी था, आप इमीडिएटली 25 और 30 तो एलिमिनेट कर ही पाए, बचे 10 और 20, और वो हल्का ना दिख जाता है. 10 तो बहुत ही दूर है. 10 एंड 25 कैन नॉट गिव यू 23.5. इतना नजदीक 25 के आने के लिए ना, 25 वाले का तो प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए बजाय 10 वाले के. सो वो उतना अंदाजा भी लग जाता है कि ठीक है, ये दो तो सीधा हट गए, ये तो ऊपर है, और एक इतना नीचे है कि वो इसलिए हट गया. सो देयरफॉर आई कैन से 20% इज द राइट आंसर. अल्टीमेटली वी जस्ट हैव टू गिव द राइट आंसर बाय हुक और बाय क्रूक. कौन देख रहा है हमारे पूरे सॉल्यूशन को? हमने पूरा वेटेड एवरेज से निकाला है, कैसे निकाला है. सो दैट्स अ गुड अप्रोच, यू मस्ट ट्राई दैट एज वेल. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने. लेट्स ट्राई दिस एज वेल.
Question number 7 is here now. Any answer for question number 7? Prashant is the first person to answer. He says C. Very good, Prashant. Let's start doing it now. Praneeth and Gautam can together complete a work in 12 days. After 8 days of working together, Praneeth got sick and his efficiency fell by 33.33%. As a result, they completed the work in 13 days instead of 12. If Gautam had worked alone after Praneeth got sick, then in how many days would he have completed the remaining work? That's what the question is. प्रशांत ने सी आंसर दिया है, विठलनाथ ने आंसर बी दिया है. So let's start doing it. पहली चीज, I see that later on Praneeth's efficiency is being decreased by 33.33%, which is 1 by 3. So can I assume Praneeth makes 3 units in a day and Gautam makes A units in a day? See, if I have assumed Praneeth's unit as 3, तो गौतम की यूनिट में अब 4 2 1 ऐसा कुछ नहीं ले सकता अपनी मर्जी से, राइट? भाई एक आदमी तो कोई भी यूनिट बना सकता है, बिकॉज इन ऑप्शंस आई डू नॉट हैव एनी एब्सोल्यूट वैल्यू कि उनको कोई 20 चीजें बनानी है, 25 चीजें बनानी है. कोई एब्सोल्यूट होती तो मैं ना ले पाता. वन पर्सन कैन ऑलवेज बी अज्यूम्ड एज एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एफिशिएंसी, लेकिन फिर मैं गौतम की एफिशिएंसी को सेम नहीं मान सकता या फिर कोई उसके रेशो में नहीं मान सकता. सो लेट अस अज्यूम प्रणीत इज मेकिंग 3 यूनिट्स एवरी डे, गौतम इज मेकिंग ए. They can complete a work in 12 days. So can I say that the work is 12 times of 3 plus a, which is 36 plus 12a. The work is 36 plus 12a. हुआ क्या? आफ्टर 8 days ऑफ वर्किंग टुगेदर, अब इन्होंने पहले 8 दिन काम किया दोनों ने मिलके, 3 plus a. Praneeth got sick and his efficiency fell by 33.33. Now Praneeth started making 2. As a result, they completed the work in 13 days instead of 12. मतलब अब की बार उनको 13 दिन लगे. So that means 5 दिन और. The work was for 4 more days, but they took 5 more days now to complete the work. So now in the next 5 days, can I say they must have worked 2 plus a? Why? Praneeth's efficiency fell by 33.33%. His efficiency became 2. Gautam is still A. And this is equal to the total work that they are doing. From here, I get 24 plus 8A plus 10 plus 5A is 36 plus 12A. So 13A minus 12A is A and 36 minus 34 is 2. I got the value of A from here as 2. I got the value of A as 2. What is the question asking you? If Gautam had worked alone after Praneeth got sick, then in how many days he would have completed the work? अगर गौतम अकेला काम करता प्रणीत के आई मीन सिक होने के बाद. सो अब आता है बात क्वेश्चन पे. Praneeth got sick after 8 days of work. देखो after 8 days of work, only 4 days of work was left. So work left was 4 times of 3 plus A, which is 2. So the number of units left were 20. And if only Gautam would have worked, he would have made 2 every day. So he would have taken 10 more days to complete the work. My answer is option D, that is 10 days for this question. They would have taken 10 more days to complete the work. 12 days का काम था दोनों के मिलके करने का, 8 दिन तक दोनों ने किया. So the job left was for 4 days for both of them together if they work at the normal efficiency. So at normal efficiency in 4 days they could have made 20 units. But now Praneeth is not working at all. So Gautam is making 2 every day. 20 will be made in 10 days. By that logic, we got the answer as D, 10 days. I'm sure it is understood, Prashant Vittalnath. I'm sure you got your mistake, जो भी आपकी mistake रही होगी.
हाँ, ये 3 ना लेते तो क्या क्वेश्चन नहीं होता, इट कुड हैव बीन डन देन एज वेल। 3 की बजाय यू कुड हैव टेकन B2, ठीक है। यहां पे लेट अस से आई वुड हैव टेकन B। अगर ये B लेता तो यहां पर भी B आ जाता, यहां भी B आ जाता 36B, यहां भी 8B प्लस A आ जाता, यहां पे देन इट वुड हैव बिकम B का 2/3, इट वुड हैव बिकम 2/3B, एंड दिस वुड हैव बिकम 36B, सॉरी 12B, देन ये भी 12B हो जाता। तो ऐसा करके भी अल्टीमेटली आ जाता। अल्टीमेटली यू कुड हैव गॉट दिस एज 220B, दिस कुड हैव बीन 2B, 20B/2B वुड हैव बीन स्टिल 10। तो आंसर मेरा सेम आना था। एक नंबर आप कभी भी एज्यूम कर सकते हैं, दूसरा नंबर फिर उसी के हिसाब से एडजस्ट होकर सॉल्व करके आ जाता है। सो आई एज आई सेड कि बी लेके करते आंसर तो आ जाता, बट इट वुड हैव मेड द थिंग्स अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज यू वुड हैव गॉट टू वेरिएबल्स। दैट मेक्स द क्वेश्चन अ लिटिल डिफिकल्ट। ओके, so this brings us to the last question of the day, question number 8 on your screen. Try this and then we will close the session after this. That's question number 8 now. Music over is the first person to answer. He says C. Let us start doing it as well. A and B are two railway stations 120 kilometers apart. A train leaves A at 10 a.m. heading towards B at a speed of 40. Another train leaves B at 11:30 a.m. heading towards A at a speed of 20. The trains meet each other at what time? This is what the question is asking you. ठीक है? How do we do these kind of questions? Please ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस तरह के questions काफी common है. सो अ ट्रेन लीव्स ए, अ ट्रेन लीव्स बी, और ये डिस्टेंस आपका है 120 किलोमीटर्स का. द ट्रेन फ्रॉम ए लीव्स एट 10 a.m. द ट्रेन फ्रॉम बी लीव्स एट 11:30 a.m. दिस ट्रेन लीव्स एट a speed of 40. This train leaves at a speed of 20. At what time they are going to meet? I'll also give you another way of, I mean another modification in the question. और भी तरीके से सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा मुश्किल बना सकते थे इसको. कैसे बना सकते थे? सॉल्यूशन फिर भी यही रहेगा. I'll talk about that as well. Okay? तो 10 और 11:30 पे चल रहे हैं, तो सीधी सीधी बात ये है, द जनरल वे ऑफ डूइंग इट इज दिस ट्रेन इज लीविंग एट 10, दैट ट्रेन इज लीविंग एट 11:30. सो जो ट्रेन जल्दी चल रही है, so by the time the other train starts running, it would have already covered some distance. I'm sure that you all can see that. So in 1.5 hours at a speed of 40, this train would have covered a total of 60 kilometers. So can I say by covering 60 kilometers, this train would have reached here? 11:30 पे the train would have reached here. Okay, and now at 11:30 the train starts running in this direction at 40. At 11:30 that train starts running at a speed of 20. The distance between them is 120 minus 60, 60. 60 is covered at a relative speed of 40 plus 20 in 1 hour. तो 11:30 के 1 घंटे के बाद वो मिल जाने वाले हैं. The answer is option C. 12:30 p.m. is the time at which they are going to meet. I'm sure it is understood. 12:30 p.m. is the time at which they are going to meet now. Hope no doubt here. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. I'm sure. Okay. Now, अब जैसे मैंने बोला था और किस तरह का क्वेश्चन इसमें बन सकता है, देखिए थोड़ा सा चेंज करता हूं क्वेश्चन को. 120 is not given, 40 is not given, 20 is not given. A train starts from A at 10 a.m. and reaches B at
1 p.m. Okay, it reaches B at 1 p.m. The train from B starts at 11:30 p.m. and reaches A in, let's say, 5:30 p.m. At what time these two trains are going to meet? The answer is still 12:30. The answer is still 12:30. 120 40 20 का कोई रिलेशन नहीं है इससे. मैं आपको सीधा बताऊं क्यों. The time taken by this train is 3 hours. The time taken by this train is 6 hours. तो सीधी सीधी बात यह कि सेकेंड ट्रेन की स्पीड फर्स्ट ट्रेन की स्पीड का हाफ है. If the speed of this train is half of the speed of this train, whatever is the distance between them, they are going to meet at 12:30. ट्राई करके देखिएगा. कोई डिस्टेंस अज्यूम कर लो. कोई भी डिस्टेंस अज्यूम कर लो. You can assume a distance of 40, 50, 60, 80, 100, 120. कुछ भी अज्यूम करके देखो, आंसर यही आने वाला है. तो मैं डिस्टेंस 120 क्यों ना अज्यूम कर लूं. अगर मैं डिस्टेंस 120 अज्यूम कर लूंगा, ट्रेन ए इज कवरिंग 120 इन 3 आवर्स, मतलब उसकी स्पीड 40 आ गई, ट्रेन बी की स्पीड 20 आ गई, तो क्वेश्चन सेम ही तो बन गया. 120 किलोमीटर इज कवर्ड फ्रॉम वन साइड एट 40, फ्रॉम वन साइड एट 20. एट व्हाट टाइम दे आर गोइंग टू मीट? द आंसर वुड बी स्टिल 10:30. राइट. सो बेसिकली जब भी सेकंड वाले की स्पीड फर्स्ट वाले की स्पीड का डबल होगी, इन ऑल दीज केसेस दिस वुड बी करेक्ट एंड दिस वुड बी द आंसर. रेशो कुछ भी हो, पॉइंट ये है कि आंसर इसी तरीके से करना है. वो वाला क्वेश्चन जो मैं ऊपर बता रहा हूं उसके लिए भी यही करोगे, जो गिवन क्वेश्चन है उसके लिए भी यही करोगे, बट पीपल फंबल इन दैट क्वेश्चन जिसमें डिस्टेंस भी ना हो, स्पीड भी ना हो. हाउ डू वी डू दैट? वी आर जस्ट गिवन द टू टाइम्स. इट स्टार्ट्स एट दिस टाइम, रीचेस देयर एट दिस टाइम, स्टार्ट्स एट दिस टाइम, रीचेस देयर एट दिस टाइम. तो उनके टाइम्स का एक एलसीएम लेके डिस्टेंस मान लो, उससे स्पीड आ जाएगी, और बस डू इट द वे दैट वी हैव डन, and that way you get the answer to that question as well. That's all from my side, guys. Thank you very much. I'm sure the session was useful. If you have any further questions, you can always put your questions in the comment section. I'll answer there. That's all for today. Thank you.